Hello friends, Trading Discipline welcomes you in a one-year professional traders program. Friends, today I have brought a new concept, a new video for investors, those who have a long-term horizon of say 10 plus years or even 5 plus years and have no knowledge of stock market but want a return of around we can say something about 12%, more than 12%, 12 to 15% I would say. It may be higher as well, but not less than 12% on an average. Okay, so this video is especially for our Indian investors, those who have no knowledge of stock market but wants good return from the market. And friends, remember in my previous videos I have told you that equity investment or the stock market investment is the best investment option because normally it can offer more than 16% return, and if we have knowledge we can make on an average 20% or even more profits from the stock market. But for that we need right knowledge of stock market, and if anybody is wish to acquire the right knowledge, then I have started 1-year professional traders program, and in this program I am teaching how to become professionals, how to gain the right knowledge and what all things we have to see. So friend, this program is for very serious traders and investors, those who want right knowledge and are very serious in learning. And remember, there is no shortcut in life. We have to struggle in learning because see, many people think that if they will join this program, so they will get something spoon feeding like conditions and things that there will be some holy grail things. No, there will be nothing like this. I will just give you the right knowledge. I will teach you how to do it, how to make first of all we will focus on learning right knowledge. Once we have right knowledge, then we can make money. But people think that I am offering them some holy grail. So there is no holy grail in market or anywhere or even any life. So we have to struggle in learning as well. Okay, so without wasting time, I will move on to this video, and this video will be in both Hindi and English language. So दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रेडिंग डिसिप्लिन आपके लिए आज एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको दोस्तों कि ये बताऊंगा कि हम लोग जिस पर्सन को इंडियन हमारा कोई भी इन्वेस्टर है जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और ये लॉन्ग टाइम मेरा मिनिमम 5 ईयर प्लस है, 5 ईयर से ज़्यादा का जिसका होराइजन है मार्केट में। और आप याद रखें कि हायर द टाइम फ्रेम हायर द रिटर्न्स। ये आपको एक बात याद रखनी है कि आप जितना लंबे टाइम के लिए जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही आपका जो है प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो ये बात आप याद रखिए। मैं आपको अभी कंपैरिजन में भी दिखाऊंगा कि ऐसे जो मैं बोल रहा हूँ वो कैसे रिलेट करता है मार्केट में, वो चीज़ आपको मैं भी समझाऊंगा भी कैसे ये होता है, ठीक है। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेके आया हूँ जो कि बेस्ट है उन लोगों के लिए जो जिनको मार्केट की नॉलेज नहीं है लेकिन वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, या जो लोग नहीं भी करते हैं और वो मान लो उनको कुछ भी नॉलेज नहीं और वो मान लो क्या बोलते हैं, कोई एफडीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई बैंक्स में ही इन्वेस्ट कर रहा है कि वो जाके बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा रखता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको कुछ अच्छा प्रॉफिट वहाँ से मिल जाए और वो सोचता है कि ये सफिशेंट है उसके लिए। तो ये मैंने पहले भी बताया कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो हर साल कम से कम जो है, मतलब हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट है मिनिमम जो एवरेज वो है 5 से 6% का जो इन्फ्लेशन रेट रहता है। और अगर मान लो कोई बैंक सेविंग में या एफडी में आपको 5, 7, 8% भी रिटर्न ऑफर करता है तो वो इन्फ्लेशन को काउंट करके नहीं होता है। वो इन्फ्लेशन अगर हम उसमें से माइनस करेंगे तो हार्डली वो 0 या 1-2% ही रहेगा। सपोज कर लो अगर बैंक आपको सेविंग अकाउंट को 6% ऑफर कर रहा है एज अ सेविंग अकाउंट, तो 6 में से अगर आप इन्फ्लेशन को निकालें तो 6 - 6 इज 0, तो आपका रिटर्न 0 है। आपका जस्ट वही पैसा मिलेगा जो आपने सेव किया है, राइट, और आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। अगर मान लो कोई एफडी है जिसमें मान लो 8% तक का रिटर्न आपको दिया जाता है, तो उसमें से भी हम 6% माइनस करेंगे इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन को जिसको महंगाई दर बोलते हैं कि हमारी जो महंगाई दर है वो एवरेज में 6% है, हो सकता है वो अप डाउन भी हो जाए लेकिन लॉन्ग एवरेज में वो 6% की है। तो अगर हम उसमें से 8% में से हम 6% माइनस कर दें तो आपके पास 2% बचता है। तो 2% रिटर्न लॉन्ग रन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग जिनको मार्केट की नॉलेज नहीं है और वो अपना पैसा सही तरीके से ग्रो करना चाहते हैं, तो शेयर मार्केट जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन शेयर मार्केट बहुत सारे लोग जो है इस मार्केट में आने से डरते हैं बिकॉज बहुत से लोगों को लगता है कि गैम्बलिंग प्लेस है या यहाँ पर जो है लोग पैसा नहीं बना सकते। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारा पैसा हम बना सकते हैं लेकिन हमारे पास राइट नॉलेज चाहिए, ठीक है।
और जिन लोगों को अगर मार्केट से ही ट्रेडिंग करके क्या बोलते हैं वो पैसा बनाना, तो मैंने एक रिसेंटली 1 ईयर प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है और बहुत ही मिनिमम चार्जेस में 1150 रुपीज़ फॉर द होल 1 ईयर ये प्रोग्राम है। और बहुत ही सिंपल वे में इसको कंडक्ट किया जा रहा है, जिसमें आपको एक राइट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगी। तो अगर कोई इसमें भी जुड़ना चाहता है तो आप इसमें भी जुड़िए। लेकिन जो लोग कुछ भी नहीं करना चाहते, कुछ सीखना नहीं चाहते, तो उनके लिए ये वीडियो मैं कहूँगा कि ये वीडियो जो है एक ऐसा वीडियो है कि जो एक आई ओपनर है और एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट में आपके लिए लेके आया हूँ। तो इसमें दोस्तों आपके पास सिर्फ एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है कि आपका KYC होना चाहिए। और अगर जिन लोगों का KYC नहीं है, KYC का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। ओके, तो KYC होना जरूरी है। और जिन लोगों के पास KYC नहीं है तो वो KYC किसी बैंक के थ्रू भी करवा सकते हैं डायरेक्टली, या KYC की वेबसाइट पे जाके खुद भी अपनी KYC जो है बना सकते हैं। राइट, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसको आगे वीडियो को प्रोसीड करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए एक मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज़ बात कर रहा हूँ कि जो लोग मार्केट में, मैं कह रहा हूँ कि कम से कम जिनको 14-15% का इन्वेस्टमेंट रिटर्न चाहिए लॉन्ग रन में, तो वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें SIP के थ्रू, जो कि एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें आपको मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10+ इवन कि कोई 5 ईयर प्लस भी किसी का होराइजन है तो वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जिन लोगों का जो टाइम होराइजन मतलब इससे कम है तो उनको कोई अच्छा रिटर्न यहाँ मिलने वाला नहीं। ठीक है, मिनिमम 1 ईयर तो होना ही चाहिए कम से कम, जो कि अगर कुछ भी एक शॉर्ट टाइम भी अगर पैसा रखना चाहते हो तो 1 ईयर प्लस होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज अदरवाइज 1% का वहाँ पे वो एक टैक्स भी होता है। ठीक है, तो 1 ईयर से ज़्यादा टाइम हो तो वो टैक्स नहीं लगता। राइट, सो दोस्तों आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आपको सेक्टोरल इंडेक्सेस में फंड्स में और स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सेक्टर फंड्स में तो आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, स्मॉल कैप्स भी बहुत रिस्की रहता है तो आप उनको इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है 3 कैटेगरीज ऑफ फंड्स में यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, जो कि मिड कैप फंड्स होते हैं और मल्टी कैप फंड्स या फिर इंडेक्स फंड्स। ये तीनों में अगर आप करेंगे, तीनों का कम्बिनेशन लेंगे, चाहे अगर आप इनमें इक्वल अमाउंट डाल के भी करें या मिड कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट करें, क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स में ज़्यादा पोटेंशियल होता है ग्रो करने के लिए। मल्टी कैप्स जो है वो तीनों कैप्स का मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों का कम्बिनेशन होता है, तो ये मल्टी कैप बोलते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा कम्बिनेशन हो सकता है। और एक हमारे पास और आता है इंडेक्स फंड। राइट, तो इंडेक्स फंड जो है वो निफ्टी या सेंसेक्स के फंड्स होते हैं। और आपको पता है कि जैसे हमारा निफ्टी और सेंसेक्स जैसे जैसे ग्रो करता है तो उसके हिसाब से उसकी ग्रोथ बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट है। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन में देखें तो अगर मैं थोड़ा सा आपको मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं निफ्टी का चार्ट खोलने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइप करें, मैं आपको सबसे पहले मैं एक साइड पे जाएंगे, वहाँ पे आपको मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये फंड्स कैसे काम करते हैं और कैसे इनका रिटर्न आएगा। तो ये बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। मार्केट आपने सुना होगा कि मार्केट में लॉन्ग रन में अच्छा ही रिटर्न दी है, और पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। ये मतलब कि देखो, जैसे सिंपल बात है कि देखो दोस्तों क्या होता है, जैसे जैसे कोई कंट्री की इकोनॉमी बढ़ती है उसके क्या बोलते हैं एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, GDP ग्रोथ जो है कंट्री की वो क्या होता है, वो थोड़ा चेंज हो सकती है कभी शॉर्ट टाइम में, बट ओवरऑल लॉन्ग टाइम में हमारा जो GDP ग्रोथ है वो इंक्रीज ही होगा। ठीक है, तो हमारी जो है इकोनॉमी जो है जैसे रेगुलरली ग्रो करती है, जैसे हमारा GDP ग्रोथ होती है, तो वैसे ही मार्केट में भी आपको क्या बोलते हैं आपका पैसा ग्रो होगा। हाँ, शॉर्ट टाइम में कभी हो सकता है अप एंड डाउन चल रहा मार्केट में, कभी मार्केट क्रैश भी हुआ है। और मैं पिछला आपको अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊं, जस्ट आपको ये शो करने के लिए मैं आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिखा रहा हूँ ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए कि किस तरीके से ये हमारा जो फंड काम कर, जो इंडेक्स फंड की मैं बात कर रहा हूँ, ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो मैं इस चार्ट को थोड़ा छोटा करूँगा। ये हमारा जो है आप देख सकते हो, ये पूरा मैंने चार्ट खोल रखा है, पूरा चार्ट खोल रखा है दोस्तों। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको ओके। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है।
इस चार्ट में आप देख सकते हो ये 1996 के ऑनवर्ड ये चार्ट हमारा शो हो रहा है। ओके, investing.com साइट में दिखा रहा हूँ आपको, एक फ्री चार्टिंग साइट है। अगर आप किसी को भी चार्ट यहाँ पे देखना हो तो कोई भी पर्सन यहाँ पे जाके सिंपली वो चार्ट देख सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं इसको पीछे जाके दिखाऊंगा, आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा जो निफ्टी का स्टार्टिंग हुई थी जो फर्स्ट मंथ, ये मैं मंथली चार्ट पे दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा मैं बड़ा करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको ये चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपको क्लियर हो जाए। तो ये फर्स्ट मंथ का जो है निफ्टी का मैं मंथली चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, निफ्टी का। तो ये 1995 में 1 नवंबर 1995 में इसका जो है ये 903 के उस पर चल रहा था 1995 में, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि 10 इयर्स में, ओके 10 इयर्स में, सॉरी 1996 में है, नहीं 95 हाँ नवंबर का है ना, तो मतलब आप मान के चलो 96 का है। तो हम इसमें 10 ईयर चले जाएंगे, दैट इज़ 2006। तो मैंने आपको दिखाया कि 203 पे था ये, और 2006 ये हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 2006 में हमारा जो है इसका ग्रोथ कितना हो गया निफ्टी का, 903 से 2023 हो गया। तो आप इसका कैलकुलेशन करिए, ठीक है। ये बहुत बड़ा मतलब कि अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर लेके कैलकुलेशन करता हूँ, एक मिनट मुझे कैलकुलेटर का ऑप्शन, ये हाँ कैलकुलेटर। तो अगर मैं कैलकुलेटर पे दिखाऊंगा आपको, एक मिनट हमारा कैलकुलेटर खुल जाए। ये हमारा कैलकुलेटर खुल गया है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी करंटली मैंने कहा 2006 में, यानी कि 10 इयर्स टाइम फ्रेम में, ये बिगिनिंग ऑफ 2006 में बता रहा हूँ, जस्ट बिगिनिंग ऑफ 2006 में हमारा जो है क्या बोलते हैं इसको, 2006 बिगिनिंग में मैं दिखाऊंगा आपको। यस, ये रहा जनवरी मंथ का, ओके। तो 2026 जनवरी का जो है ये बता रहा है इसका 29,000 एंड अगर हम यहाँ पे भी देखें, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको इसका हाई दिखेगा कि कितनी हाई वैल्यू बता रहा है 1 जनवरी की, 2 जनवरी का एक्चुअली है, ओके। तो आप देख सकते हो इसका हाई जो है 3005 है, ठीक है, या करंटली 2892, यानी कि आप मान के चलिए 2900, आप मान के चलिए 2900 है। और मैंने आपको जो बिगिनिंग में दिखाया था, मैं दोबारा से आपको दिखाना चाहूँगा कि जो हमारा फर्स्ट मंथ का मैंने जो निफ्टी का जो आपको दिखाया था कि जब ये इसकी जो मतलब जब ये ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ था, जब निफ्टी का जो है मतलब इसके रजिस्टर, हम ये कह सकते हैं जब इसकी स्टार्टिंग यहाँ पे हुई है, तो ये स्टार्ट हुआ है 1 नवंबर 1995 से, ठीक है, राइट। तो उस टाइम का प्राइस आप देख सकते हैं, आप वही हाई में देखिए 1000 का है, तो अब 1000 का है और अब करंटली क्या चल रहा है, ये 3000 का है। तो कितने टाइम हो गया फ्रेंड्स, सिंपल है 3 टाइम्स रिटर्न। तो ये बहुत बड़ा रिटर्न है, ठीक है, इसको मल्टी बैगर रिटर्न भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है ग्रो करेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, आप मान के चलो अगर आप 2006 के मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको शॉर्ट में ही दिखाऊंगा कि अगर हम इस चार्ट को बिल्कुल छोटा करके दिखाएं तो आपको कैसे समझ आएगा कि ये किस तरीके से ग्रो हो रहा है। अगर आप ओवरऑल चार्ट को देखते हैं, अगर आप ओवरऑल चार्ट को देखेंगे तो ये आप समझ पाएंगे कि इसकी ग्रोथ कैसे हुई है, ठीक है। तो ये देखिए इसकी स्टार्टिंग ऐसे हुई है, ठीक है, 800 समथिंग के बाद एक पास इस टाइम पे भी कुछ आया, 789 भी कुछ आया हुआ है लो, ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में इसने बहुत अच्छा ही परफॉर्म किया। फिर थोड़ा मार्केट डाउन हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो बिगिनिंग में मैंने कहा ये स्टार्ट हुआ था समथिंग 900 के आसपास और देन ऊपर चला गया 1200 के पास, फिर से डाउन हो गया 720 के पास, फिर से अप हो गया। तो ऐसे करके अगर हम इसका देखें तो लॉन्ग टाइम में, ठीक है, लॉन्ग टर्म में अगर आप चार्ट को ही देखेंगे तो दोस्तों ये चार्ट एक इस रेंज में पहले डाउन रहा, उसके बाद आप देखिए कैसे ज़बरदस्त इसने मूवमेंट किया। तो यहाँ से अगर हम लेके चलते हैं कि 2003 में,
ये 1000 के पास चल रहा था और 1000 से सीधा सीधा चला गया ये 6000 के आसपास। तो कितना रिटर्न हो गया? 6 टाइम्स मल्टीबैगर रिटर्न। 2003 में मैंने आपको दिखाया यहाँ पे 1000 पे था और ये 2007 में 6000 चला गया, ठीक है, 6000 प्लस। तो यानी कि इसने 6 टाइम रिटर्न दिया। कितने टाइम में दिया? जस्ट 4 ईयर्स में, ठीक है। और देन उसके बाद आप देख सकते हैं फिर ये मार्केट कुछ डाउन भी रहा 1-2 साल के लिए, 1 साल के लिए डाउन रहा, ठीक है, 2007 नवंबर से। और ये डाउन आ गया, स्टॉक मार्केट गिर गया, शेयर मार्केट गिर गया और ये आ गया 2000 के आसपास और ये 1 ईयर के लिए डाउन रहा। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको सस्ते में खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो यहाँ पे और परचेज कर सकते थे। ये 2008 का जो क्रैश आपने मार्केट में सुना होगा, 2008 का जो क्रैश हुआ था मार्केट में, वही क्रैश पे ये इतना डाउन आ गया, ठीक है। यानी कि इसका डाउन आ गया समवेयर 2255 समथिंग, इतना डाउन आ गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट 2 ईयर्स में फिर से उसने अपने लेवल को ऑक्युपाई कर लिया, ये लेवल, देन अगेन डाउन। सो फ्रेंड्स नाउ अभी मैं आपको इसको इंग्लिश में भी बताऊंगा कि जो मेरे इंग्लिश फॉलोवर्स हैं वो उनको भी ये चीज़ समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो फ्रेंड्स नाउ लेट अस मूव टू एनीबडी दोज हु वांटेड टू trade in those who want investment in stock market but have no knowledge and want 14-15% return in the long term. So they can just directly go and buy direct mutual fund funds from the different mutual fund houses online as on monthly SIP basis, or even someone can go for lump sum investment also. So I will show you friends how this thing can work. So you should invest for minimum 5+ years. I have written it that for 10 years and so to get this type of return, right? But we should avoid sectoral funds and the small cap funds. Strictly avoid these funds because these funds can be very risky, because sectoral fund is one type of fund. So some sector can be for in downtrend for years. So in that case it can be dangerous. And small cap funds, these are the companies which are newly registered companies on the stock markets, and most of these companies they fail in the long run, and those who have put their money they have lost their money. But they can be potential multi-baggers as well, but for that we need right knowledge. Okay, and friends, as I told, I think most of you might be knowing that I have started 1-year professional traders program, and in this program I am teaching all those things needed to become professionals. Okay, and I am charging a very small amount of 1150 rupees for the whole program, for 1-year program, where you will get right knowledge through PDF or lessons, Excel sheets and other things, right? And you will get my support throughout the year. So not wasting my time, wasting your time. So friends, let us start that what all funds we can buy from the from online funds from the we can say on many of the well-known fund house. So these are the 3 different kinds of funds. One is mid-cap fund, the best one, because these are the mid-cap companies which have a very high potential of growing to large cap funds. Then comes the multi-cap funds. Multi-cap funds are the mix of the 3 cap funds, that is small cap, mid-cap and large cap. So there is a combination of all these funds, which the combination becomes a very good rewarding fund. And then comes the index funds. Okay friends, so you can buy, I have selected 2 well-known fund houses based on their performance. So these are the ICICI Prudential funds and the HDFC Bank, HDFC mutual funds, we can say HDFC mutual funds. Sorry, let me write it, HDFC mutual funds. Sorry, HDFC mutual funds. And don't say I am recommending anyone. I am just saying because I have made this list based on their performance. So these are the well-known companies, and you can go for any other well-known fund house, right? So you can search online as well. And what we have to do is we have to invest directly from their websites. But there is a prerequisite, that is we must have the KYC. So KYC is a must thing for this investment. You must have KYC. Whether you have DMAT or not, even you can invest without DMATs also, but you must have the KYC, and you can do your KYC through some banks or directly from the KYC website. Okay, so let me tell you now.
So friends, before going forward, let me show you the Nifty chart just to make you understand that how these funds, how mutual funds will work, or how index funds. Typically index funds, I am showing it typically index funds because this is Nifty 50 is an index, and if I am showing this in index fund from the beginning, so you will get an idea how your money would have grown, because you know the funds will work directly proportional to, you know, the growth of the Nifty or the Sensex. So I am showing you Nifty chart only. So let us start it. We have, suppose we have you know, as we can see from this chart that I am checking the monthly chart of the Nifty on the investing.com. You can check anything on there as well. Okay, means if you want to study the chart, so you can go there, and this is a free website. So friends, you can see, just focus on these things. There is O for open, H for high, and L for low, and C for close. So you will just, I will click here, and you will just focus on that price. So you can see friends, in the year 1995, 1st of November 1995, we can see the Nifty has started, its chart is shown there, because its chart, we can say the trading on the online trading has started from then onwards. Before that, there were, I told you in previous video also, that the trading was done sitting in a ring system under a banyan tree. Okay, so there was done, you used to do, brokers used to sit there and they used to buy and sell shares in the physical format. So that time the things were different. If anybody wants to learn that knowledge, so you can go to my previous video in intraday series 1, in video number 2. I have told all this. Okay, right. So friends, this is Nifty 50 is an index. It is an index of top 50 companies in the Indian stock market. These are top 50 companies, and that is made up of all, you know, 50 companies. So those 50 companies we can say as an index. It has started in the year 1995, 1st of November, and you can see the high price wise was 1001. You can see here 1001. The price was 1001, and let us start after what happened after 10 years. Or we can say it is approximately 1996. We can see, because that was 1st of November 1995. So we can see in 10 years, that is 2000. Let us say that is in 2006. So friends, you can check in 2006, 2nd of January 2006, the price of the Nifty has grown from 1000 to 3000. Means it has given 3 times return. If someone has invested in market that time in index funds, so his money would have multiplied 3 times. Whatever amount, suppose someone has invested, we can say 1 lakh, so that would have turned 3 lakh. Okay, I will just say like this. Okay, right friends. So money will pay this. So friends, you can see then if we go forward, so you can see in this portion, if we just focus from 2003 onwards, from 2003, the Nifty was trading somewhere around 1000, in the range of 1000, and look at in 2007. By 2007, end of 2000, that is December 2007, it has touched 6000. You can check 6100 and something, 6185. Yeah, its high was 608. And you know, so you might have heard about 2008 crash in market. So you see, so the Nifty has grown from 1000 to 6000, so it has given you 6 times returns. That's a huge return. And then you can see in the same year, in the next year, we can see it's end of the year 2007. This is December. So from the next month, from January 1st 2008, the market crash has started. So you might have aware of this market crash of 2008. So from market crash from 6000 level, and it reached somewhere 2200 level. There was a big crash for the market, even for the whole global markets as well, not for Indian market. The market fell in the whole international market also fell. Okay, and due to this, you can see, because of this crash, the market has fallen down from 6000 level to 2285 level somewhere. Okay, so friends, that was a temporary fall. We can say it's for just 1 year. So those who have a long-term horizon, so they have nothing to worry with all these things. They have nothing to worry, because see, it is in 2008, but see, in the next year, within next 1 year,
by 2010, we can say within 2 years, friends, within 2 years the market reclaimed that level of 6,000 again. The market reclaimed that level of 2,000 again. So friends, those who have long term horizon, means say something around 5, I am saying minimum 5 years. It's better, higher the better. Always remember, higher the better. So see, in just 2 years the market has recovered from that 2200 level at 2300 level, and it again reclaimed 6000 level. Then again little correction to somewhere around 4500 again. But again, let us see next, by the year 2015, means in next 7 years, in 7 years Nifty made another high, that is 9000 level. Okay, so those who have invested somewhere in this level of 2000, 2300, and it reached up to 9000 level, so that's a huge return again. Okay, and in just in how many years? It was in 2008, and it reclaimed a level of 9000 in the year 2015. So just within 7 years. Within 7 years. Then again there is a market fall. Somewhere again 6900. It fallen down to 6100. But this time you can see it has not touched previous high level anywhere. Even it remained higher than that. And see now. So this is a current market, friends. Currently this is the, I told you about in 2015. It claimed it made a high of 9000 and then fallen down to 6900, somewhere 7000 level. So that was an opportunity for investors actually. So those who have long term horizon, they have nothing to worry about market up and down movements. So again, for 1 year it has given some movement, somewhere 2000 points downward movement. And see again, friends, now we are at this level currently. Currently Nifty had touched a 12,000 level. Currently it has touched 20,000 level, and in in the year 2018 it has made a high of 1200 and so, and then again little some correction of, we can say, 2000 points. So friends, those who have a long term horizon in the market and want good return and the safe return from the market, so they should go for the index funds. They are the best because see, their growth is directly proportional to we can say the performance of the index. So let us see the overall chart of the Nifty from 1995 till date. So you can see here, this is the total chart. So you can easily understand, friends, how it has grown. From 1000 level it reached 12,000 level. So it's a huge growth. Okay, so those who want to invest in market and have no knowledge of stock market, so they can simply go for index funds. And I am telling you the three, we can go for 3 different funds. We can buy mid cap funds, then multi cap funds, and the index funds. So these are the 3 funds that we can go for. So I am telling you some, we can say we should go for well known funds, because there are many mutual funds which are not growing well, but we should go for well known funds which have very good performance in the past. So let us show you, friends. I have recorded some things for you to show that how they are benchmark, or we can say Nifty index, or we can say BSE Sensex index, how they are performed. And as I told you, they work proportional to the performance of these mutual funds is based on the performance of the index or the benchmark. Means if they grow, definitely our money will grow. And in the long term, as I have shown you from the charts also, so you can easily understand that your money has grown at very fast rate. Okay, so this is the safest investment option I am telling you, friends, and I have brought collected some information that I am showing you the top we can say index funds in the Indian market that you can buy. So number 1 is UTI Nifty Fund, direct fund, that is based on the it has the highest fund size. Its fund size is 716 crore, 716 crore, the biggest. And its 1 year return is 3.42 and 3 year return is 11.58. 5 return is 12%. Okay, and its total ages, means it has incepted in last 5 years, and its expense load. So this load is applicable for 1 year. If someone has an exit before this time 1 year, so they have to pay their money is deducted by this percentage. Okay, and you can go for minimum 500 rupees SIP on monthly basis. Minimum 500 rupees.
You can start with minimum 500 rupees. Okay, so that number 2 fund is ICICI Prudential Nifty Next Fund. So this fund in last 1 year it has given a negative return, but if we see the 3 years return is 12% and 5 year return is the 18%, the highest. So friends, we should not be bothered about the short term market turmoils and up and downs. If we have a long horizon of minimum, I would say 5 years, so we will make good money. So let us show all some funds which I am showing you. The top funds, Sensex funds, top index funds that I collected some information regarding this. So the second number, friends, third number is HDFC index fund. Let us show its record. Past 1 year return is 5.86, 3 year return is 12%, and 5 year return is also 12%. Okay, right? And you can start with minimum SIP of 500 rupees in this. Then comes that that was Sensex fund, and this is Nifty 50 plan. So again, let us check its performance. Again, 3%, 11%, 12%. So friends, you can check the performance. So we should have a minimum horizon of 5+ years to get a good return. So I have shown you, and let me tell you the best performance done by, then we can go for SBI Nifty funds also. I am showing you top 5 funds, so you can check their performance. So in the last 5 years they have given minimum 12% return. So what I was saying you at the time I've started this video, that you could get minimum 12% returns minimum in 5 years. So you must have a time horizon of minimum 5 years, so you will get minimum 12% returns. Minimum, I would say minimum. It may be higher also, but minimum it would be 12%. And if we deduct inflation, that is 6%. That's an important point, friends. If we deduct inflation, so you still get something around 8% return. But if you go for we can say investment in ETF or FDs as well, so you will get overall 8% return. And if we can say subtract inflation of 6%, so your return will be only 2%. That is negligibly smaller. We can say that's not a return actually. So why I am saying we should go for investment in mutual funds or in stock market, because stock market has we can say outperformed in all the investment options. It's the best investment option, but we need right knowledge. And for this mutual fund, we don't need anything except the KYC. As I told you, we need KYC is the first requisite. You must have the KYC and you can go for this. So 5 return is minimum 12%, and you can start as small as 500 rupees as a monthly SIP. So friends, let me show you that I have told you that UTI mutual fund is the largest fund based on its net worth, that is 716 crores of the corpus. But ICICI Prudential Nifty Next 50 plan has yielded the highest 5 return of 18.12%. So this is the best performance. So we should go for best performing funds rather than the, we can say, see, this corpus size does not matter. What matters is the performance. So we should go for higher performing funds. Okay. So friends, all the above mentioned funds have been launched nearly the same time. However, according to performance of their indices, they have performed or rather exceeded in their performance when compared to the performance of their benchmark. Benchmark here means index, right? So दोस्तों, जो भी फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू दिखाया हुआ है, इस एक मैंने कुछ डेटा कलेक्शन किया हुआ है. तो इस डेटा कलेक्शन के थ्रू मैंने टॉप 5 कंपनीज का मैंने आपको जो है म्यूचुअल फंड हाउसेज का आपको मैंने फंड्स बताए हुए. सबसे नंबर 1 पे आता है, ये आता है कि फंड साइज कितना है. तो मतलब उसके कैपिटल के बेसिस पे, कॉर्पस के बेसिस पे ये सबसे क्या है बड़ा फंड है, क्योंकि इसका जो 716 करोड़ का इसका कॉर्पस है. फंड साइज बहुत बड़ा फंड है, ठीक है. लेकिन अगर उसका हम रिटर्न देखेंगे तो मिनिमम रिटर्न इसने 5 साल में जो है 12% का रिटर्न है. मिनिमम में बोलोगे 12% रिटर्न. अगर हम इस तरीके से नंबर 2 पे जाएंगे तो ये हमारा ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है, जिसका 1 ईयर रिटर्न तो नेगेटिव है, नेगेटिव 8%. लेकिन हमें 1 ईयर से कोई मतलब नहीं है. हमारा जो होराइजन है, कम से कम इन्वेस्टमेंट होराइजन हमारा 5+ ईयर्स होना चाहिए. तो अगर जिसका 5+ ईयर्स का होराइजन है, तो इसने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है, 18.12% रिटर्न दिया हुआ, ठीक है, 18.12. और उसके बाद आता है HDFC फंड, तो इसने भी 12% का रिटर्न दिया हुआ है. उसके बाद हमारे पास आता है HDFC के 2 मिलेंगे आपको, एक इंडेक्स फंड है और एक सेंसेक्स फंड है. तो दोनों का 12% का जो है 5 ईयर्स में 12% रिटर्न दिया हुआ है.
ठीक है। और हमारे पास SBI का भी निफ्टी इंडेक्स फंड है जिसने रिटर्न दिया है 12% अगेन। सो मैं ये बोल के चल रहा हूँ कि अगर आपका जो है अगर आपका 5 साल का होराइजन है, 5+ ईयर्स का होराइजन है, अगर आप इसका इन्वेस्टमेंट होराइजन इतना है तो आप जो है डायरेक्टली इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, मिड कैप और क्या बोलते हैं मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो आपको मिनिमम 12% रिटर्न मिलेगा। और जैसे कि आपको पता है हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है, जो मिनिमम जो है 6% एवरेज करके उसका रेट है, तो अगर हम उसमें से 12 में से 6% माइनस भी कर दें, ठीक है, तो भी हमारे पास 6% का रिटर्न निकल के आता है। तो ये हो गया कि मतलब मिनिमम में बोल रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली जो है आपको इसका 14-15% या इवन के ज़्यादा भी रिटर्न मिल सकता है, समवेयर अराउंड 18% भी मिल सकता है, ठीक है। बट मैं मिनिमम करके बोल रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे 12% भी रिटर्न मिलता है तो आप मान के चलो कि आपको जो है, जो कि अगर हम उसको कंपेयर करें किसी PPF अकाउंट के साथ या FD के साथ, तो जिनका रिटर्न आपको 8% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर वो 8% रिटर्न दे रहे हैं तो वो इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन है, उसमें इन्फ्लेशन भी है, महंगाई दर भी है उसमें। तो अगर हम उसकी महंगाई दर में से उसको माइनस कर ले, महंगाई दर जो कि 6% की है, तो 8% माइनस 6% हो गया 2% का रिटर्न है। लेकिन अगर हम 12% में से 6% माइनस भी कर दें तो भी हमारे पास 6% रिटर्न है। तो ऑब्वियसली इक्विटी जो है मार्केट या शेयर मार्केट में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, यानी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए उतना बढ़िया नहीं है। इवन कि अगर आप जो है रियल एस्टेट में भी जाते हैं तो रियल एस्टेट में भी जो है काफ़ी उसमें बहुत सिरदर्दी है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें, और उसका रिटर्न भी कभी वो हो सकता है, इतना हो सकता है, लेकिन उसके काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज और काफ़ी उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सेफ नहीं है, ठीक है, राइट। तो गोल्ड वगैरह मैंने आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गोल्ड का भी फंड जो है, अगर आप बाकी चीज़ों में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो इक्विटी का, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आपके लिए डेटा कलेक्ट किए हुए थे, जो हमारा जैसे आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा फंड जो है कॉर्पस के हिसाब से जो है 716 करोड़ का कॉर्पस है UTI म्यूचुअल फंड का, लेकिन ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 प्लान ने 18.12% रिटर्न दिया हुआ है 5 ईयर्स में, जो कि सबसे बड़ा जो है रिटर्न। और ये सभी जितने भी जो इंडाइसेस है, जितने भी फंड्स हैं, वो सेम ईयर में सेम टाइम पे स्टार्ट हुए, लेकिन सबसे बढ़िया जो इसने परफॉर्म किया है कि इन्होंने इंडेक्सेस को या जिसको बेंचमार्क बोलते हैं उसको भी क्या किया, ओवरबीटिंग, उसको भी एक्सीड किया, तो बहुत अच्छा रिटर्न इन्होंने दिया हुआ है और एक सेफ रिटर्न दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाई इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड। सो फ्रेंड्स, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने का जो है इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, मैंने आपके लिए एडवांटेजेस नोट करें। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो फंड्स है ये अंडरलाइंग इंडाइसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि आपकी जो स्टॉक मार्केट कैसा कर रही है, आपका मार्केट कैसे कर रहा है, निफ्टी सेंसेक्स ये कैसा कर रहे हैं, उसके बेसिस पे है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे आपको एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये मिलता है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वैरायटी ऑफ स्क्रिप्ट्स पे जो कि डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट कॉर्पोरेट से आती हैं, डिफरेंट सेक्टर्स पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। मान लो कोई एक सेक्टर कुछ टाइम के लिए स्टेगनेंट है, उसमें रिसेशन हो रहा है, उसमें गिरावट आ रही है, लेकिन लॉन्ग टाइम में आपको एक अच्छा जो है रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडेक्स में क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स के स्टॉक्स में, स्क्रिप्ट्स में आपका इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे मैंने कहा कि जो हमारा निफ्टी इंडेक्स है, निफ्टी 50 इंडेक्स है, वो 50 स्टॉक्स का बना हुआ है, तो वो 50 स्टॉक्स डिफरेंट सेक्टर्स हैं। तो ये वन प्लस पॉइंट है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है डिफरेंट सेक्टर्स में हो रहा है, ठीक है, ये वन प्लस पॉइंट है। सो फ्रेंड, दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ इंडेक्स फंड, दैट you're investing in different sectors. Suppose one sector is suffering stagnation or recession and say for 3 years, 5 years, but when we invest in different sectors, so your investment are definitely going to do better. So it is counted by profit and growth of other sectors. See, if some sector is suffering stagnation or recession is there, so it is counted by the profit and growth of the other sector. Therefore, index funds provide diversification from the beginning of investment. So these funds are very safe. Okay. Next thing is, friends, this has a twofold advantage. One is less supervision, and the other from the investor's angle is the low management expenses. So there are negligibly small expenses which indirectly raise the profit or the income of the investor or due to low cost. So it has low cost, so you will get more returns. Okay, and you need not to supervise. There is no need, you don't need to track it from time to time. Your involvement is negligibly zero. Okay, you just keep on investing and reap the gains in the long run. So this is second advantage. And index funds being one of the passively managed funds, all the work is done by the underlying index or the benchmark. Means you have nothing to do, you need not to make any efforts,
what all will be done, that is based on the index. Means as the index will grow, means the Nifty or the Sensex will grow, definitely your money will grow. So दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ मैं आपको एडवांटेज बता रहा हूँ कि आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के एडवांटेज, जैसे मैंने आपको कहा कि मान लो आपको डिफरेंट सेक्टर्स का एक्सपोजर मिलता है जिससे लॉन्ग रन में आपका जो है पैसा ग्रो करता है। दूसरी चीज यहाँ पे ये होती है कि यहाँ पे आपको कोई सुपरविजन करने की नीड नहीं है, आपको कोई भी मार्केट को ट्रैक करने की नीड नहीं है। आपका जो इन्वेस्टमेंट आप मंथली एसआईपी के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट करते जाइए, ठीक है, तो आपको कोई यहाँ पे मार्केट की जो है मतलब डे टू डे नॉलेज लेने की या मार्केट में क्या हो रहा है उसको ट्रैक करने की नीड नहीं, आपकी कोई सुपरविजन नहीं चाहिए। आप इसको बस इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए, ठीक है, आपका पैसा डेफिनेटली ग्रो होगा। और दूसरा चीज़ है कि इसमें जो एक्सपेंसेस बिल्कुल लो होते हैं, इसमें नेग्लिजिबल स्मॉल अमाउंट के क्या बोलते हैं एक्सपेंसेस हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा जो है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, ठीक है। और ये जो है एक पैसिवली मैनेज्ड फंड है, सो यहाँ पर जो है ये सारा जो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ये सब डिपेंड करेगा हमारे इंडेक्स के ऊपर, निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर। और लॉन्ग रन में जैसे आपको पता है कि हमारा, जैसे मैंने आपको पिछला चार्ट के थ्रू भी आपको दिखाया कि अगर हमारी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी, अगर हमारी कंट्री बढ़ रही है, कंट्री में एक्सपेंसेस होंगे, तो ऑब्वियसली जैसे जैसे हमारे कहा जाता है कि एक यहाँ पे आपको मैं एक वॉरेन बफेट जी के एक मतलब वो सुनाता हूँ। वॉरेन बफेट जी ने सिंपली ये बोला था कि जो हमारे मार्केट में जो हमारी जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन जो है प्रेजेंट जनरेशन से एक बेटर लाइफ ही जिएंगी, उनकी लाइफ हमेशा बेटर होने वाली है, ठीक है। तो आप बेटर लाइफ आप जैसे ज्यूम करके चल सकते हैं। अगर हम मान लो पीछे को अगर हम राजे महाराजे की भी बात करते हैं जो कि हॉर्सेस पे, घोड़ों पे चलते थे, हाथी पे चलते थे, तो काफ़ी वो मुश्किल सफ़र होता था। लेकिन हम उसकी जगह आज देखा अगर हम एरोप्लेन्स में ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी कार्स में ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है और बेटर है, तो ये इसको हम कहते हैं एक बेटर लाइफ स्टाइल, ठीक है। अगर मतलब कि मान लो कि पीछे के पुराने टाइम के जो राजा होते थे उनसे बेटर लाइफ पे एक आम इंसान आज के टाइम में जी रहा है, अगर हम एक लाइफ स्टाइल के बेसिस पे उसको कंपेयर करें। बिकॉज उनको जो लॉन्ग जो ट्रैवल करना पड़ता था, तो वो समझो उनको हाथी घोड़े पे करना पड़ता था, जो कि काफ़ी मुश्किल सफ़र होता था। लेकिन आज के टाइम में हम लोग कार्स में या अपने एरोप्लेन या क्या बोलते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास ऐसे जो मीन्स ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है वो कितने बड़ी है, तो मतलब उससे हमारा उनका लाइफ स्टाइल की मतलब हमारा जो लाइफ स्टाइल है, प्रेजेंट लाइफ स्टाइल उनसे बेटर है। तो सिंपल है फ्रेंड्स, जैसे हमारी बल्कि लाइफ स्टाइल बढ़ रहा, मतलब हमारी मार्केट बढ़ रही, तो तभी लाइफ स्टाइल बढ़ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास आता है कि हाउ टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास जो है दो टाइप के फंड्स, हम दो तरीके हैं इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के। एक्सचेंज रेटेड फंड्स होते हैं, लेकिन अगर आपको एक्सचेंज रेटेड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट इसके लिए, एक्सचेंज रेटेड फंड के लिए डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और इसको आप जो है इसमें आप एसआईपी के थ्रू इनको परचेज नहीं कर सकते आप। यानी कि इसको आप जब मन करे आपके, जब मार्केट आपको दिख रहा है कि मार्केट करेक्शन हो रहा है, मार्केट गिरा हुआ है और इंडेक्स की वैल्यू काफ़ी कम हो चुकी है, उसकी जो एनएवी है जिसको हम कहते हैं नेट एसेट वैल्यू, अगर ये डिक्रीज हुई है, तो आप उसको देख कर जब वो आपको काफ़ी लो मिल रही है, सस्ते में मिल रही है, आप उसको खरीद सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। तो जैसे आप कोई स्टॉक मार्केट से शेयर्स खरीदते हो, वैसे करके आप इसको भी खरीद सकते हो, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्सचेंज रेटेड फंड, लेकिन इसके लिए डीमैट अकाउंट चाहिए, इसको आप एसआईपी के थ्रू नहीं ले सकते हो, राइट। ओके, तो ये इसका एक मतलब प्लस पॉइंट है कि इसको आप जब मार्केट में करेक्शन हुई है, जब मार्केट बहुत गिरा हुआ है, तो उस रेट पे आप जो उसको बाई कर सकते हो, और जब भी मार्केट लगता है कि बहुत चढ़ गया, बहुत अच्छा चला हुआ है और आपका अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उसको बेच के प्रॉफिट ले सकते हो। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है, लेकिन हाँ इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। अब दूसरा हमारे पास जो ओपन एंडेड फंड्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के फंड्स, सॉरी मतलब दूसरा है, तो ये रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में आते हैं और इसको आप एसआईपी के थ्रू ले सकते हो। और इसके लिए आपको, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो भी आप ले सकते हो, और अगर आप बिना डीमैट के भी करना चाहते हो तो आप डीमैट के भी आप कर सकते हो, लेकिन आपकी केवाईसी होना चाहिए, ठीक। और केवाईसी करने के लिए आपको जो है आप किसी केवाईसी सेंटर पे जा सकते हो, ऑनलाइन वहां से केवाईसी कर सकते हो, या फिर आप बैंक्स, कुछ बैंक्स भी केवाईसी मतलब कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके थ्रू आप केवाईसी करवा सकते हो। Okay friends, so let us tell you about how to invest in index funds. So friends, there are two ways of investing in index funds. One is exchange traded funds, that is through a demat account. So you must have a demat account to trade to invest in exchange traded funds, because demat is the first requisite for this type of investment. Okay, but and you cannot purchase this we can say these funds, you cannot purchase through SIP.
So you have to buy them as per the market movements. If you see market has corrected, market is bearish. Let me read this line. This is helpful because if the market is bearish, the funds can be bought at a lower rate. Thus, one can plan its buying and selling accordingly and not according to a fixed SIP date. Okay, so you can choose the time to, we can say, buy. So anytime you see market is bearish, it has corrected and your NIV has decreased, so you can go and buy. And as the time, with the time, as the value of that fund grows, that index grows, and its NIV becomes very costly, so you can sell it according to your needs. But for this type of the plus point is you can buy, we can say, cheap and sell, buy low and sell higher. Okay, but this you have to track yourself. They need little efforts and you must have a demat account. You cannot make SIP in this. Second option is open-ended funds, where these are the regular mutual funds which you can avail without a demat account, or if you have a demat account you can also buy them. There is no restriction, but there is no need of demat accounts for this, and you can buy them through SIP. But the first requisite thing to invest in any of the funds, mutual funds or index funds, you must have the KYC. KYC is actually know your customer. So it's a condition that you have to fulfill. This is the prerequisite to invest in mutual funds. Okay, and you can take the services of KYC center. You can just directly go for KYC. You can go for KYC from the KYC center, or you can go approach some banks also which offer the KYC services. So you must have the KYC to invest in these funds. Now friends, let us go to some sites. So I will show you how these funds work and how much money you have got if you have invested in these funds. So let me just open one of the, I will tell you in calculation how much return you can get, just to give you an idea. So friends, I have shown you the ICICI Direct. Let me just go back. First of all, I will show you that you can directly go online and search. You can type anything like ICICI mutual funds, or we can say HDFC mutual fund, or any. You can just type online top 5 funds. Just like let me show you. So friends, I have typed this, the top mutual funds in India. So these are some of the top funds they have shown. So you can see L&T mid cap fund that has given, this is a mid cap fund. Okay, then I will show you some large cap funds. So let me just tell you about mid cap funds, which all mid cap funds have performed, how they have performed. So you can see the 3-year return is 14% and 5 return is 19.66%. Again, Aditya Birla Sunlight Pure Fund has return, 3-year return is very low, 7%, and 5 return is also low, 11%. Okay, then DSP Mid Cap Fund has 12% and in 3 years, and 70% in the 5 years. That has done very good. Then the best performance is shown by the Kotak Emerging Equity Scheme, which has given 12.64% return in 3 years and 20.91% return in the 5 years. Okay, so the best one is Kotak Emerging Fund out of these mid cap funds. So then let me show you some top performing large cap funds also. So out of the large cap funds, we can see the Kotak Blue Chip Fund has given 12.9% return, 13% return in 5 years. 17% Murray Set India Equity Fund has given 17% return in both, we can say, 3 to 5 years. Okay, and the best is done by this Murray Sets India Equity Fund. So let us just click there. I will show you that how much you invest and what should be the SIP. So friends, if you go for this Murray Assets India Equity Fund, so you can see they have shown the chart also for that. You can track the chart for 3 years. Then 5 years, this blue line is for this fund, and this is the black line is for the benchmark index, that is index, and this fund has performed better than this index itself, means it has performed better than Nifty. This blue line is shown upper,
means its performance is better than the Nifty itself. So this is 5-year return. Okay, now let us see that you can invest minimum 1000 rupees in this fund. So if someone has invested 1000 minimum for 20 years, that would have turned 7.9 lakhs in a period of 20 years. Okay, and if someone goes for lump sum one-time we can say investment, so let us just click there. For that, the minimum amount should be 20,000. Upper side there is no limit. So those who have invested minimum lump sum one-time investment of 20,000 rupees, so they would have earned 1.42 lakh in the period of 20 years. Okay, so this way you can get some idea. So let us make it 2 lakhs. So if suppose someone wants a lump sum investment of 2 lakh rupees, one-time investment of 2 lakh rupees, so within 20 years, after 20 years, so the return would be 14.21 lakh. So this I am just telling you just for an idea that how much return you will get. And now let us say, suppose a normal person invest through an SIP on the monthly basis, and suppose the monthly SIP is just 5,000. So with 5,000 rupees investment, one would have earned 39.48 lakh in a period of 20 years. Okay, now let us just check the double amount, that is 10 lakh. So you will get 78.96 lakh. So friends, it depends on the amount of money you invest. Higher your investment, higher is the return. Now let us just check for let me show you. It has shown for 20 years. So let us just check for 10 years only. Sorry, 5 years only. So within 5 years, the return of 10,000 rupees investment for 5 years would be only 7.81 lakh. And let me just calculate how much investment you have done. This is I'm telling you 10,000 investment per month. So if you go for 12 years, so for 1 year it is 1,20,000, and for 5 years it is 6 lakh. Yes, 6 lakhs. So with 6 lakh rupees you will have earned, we can say your total income is 7.81, means somewhere around 1.81 lakh. So this is in small time. So same if we go for 10 years. So let us see in 10 years that would have double. So within 10 years our investment would be, total investment would be only 12 lakhs. So 12 lakh would have turned 20 lakh within 10 years. Let us go for 15 years. Sorry, let us just check in how much it goes in 15 years. So in 15 years our investment would be 18 lakh and return would be 42 lakhs. So friends, always remember, higher the investment time, more is the return. So within 20 years, if we just check for 20-year investment, that would be 24 lakhs with 10,000 SIP, monthly SIP. So you would have invested 24 lakhs in a time period of 20 years, and that would have grown to 78.96 lakhs, means approximately 3 times of your investment. 4 times, not 3 times, it's 4 times. Okay, so this is the power of, we can say, compounding and power of the time. So higher the time frame you invest, so longer the return. Let us make it for 5 more years. You will get 1.4 crore rupees, and in just 25 years your investment will be just 30 lakhs. So if someone invest for same 10,000 rupees through monthly SIP, your total investment would be you're investing 1,20,000 per year. Per year you're investing 1,20,000, which and your total investment of 25 years would be 30 lakhs only, and it grows to 1.4 crores in a period of 25 years. So friends, remember, higher the time of investment, so you can get more returns. And for your information, Warren Buffett has started investment at the age of 11 years, at a small age of 11 years, and he said, I have wasted my 11 years. He said he has wasted his 11 years. So means we can go for investment on the name of your child at the time of birth. Once you have someone has child is born in some family, so we should start investment at that time. And if you go with just for say 1,000 rupees also, let me just
check for 1000 rupees also. So this is just 1000 rupees, and let us check it for, we go for by the time the child goes to 30 years, let us see how much this amount grows. Okay, so by the year age of the I'm just checking for 1000 rupees investment monthly, and it is just 12,000 per month. Sorry, per year 12,000 investment, and in 30 years you have invested only 3,60,000 rupees. So your 3,60,000 rupees would grow 24 lakh rupees in 30 years. So friend, this is the power of compounding, also called eighth wonder of the eighth wonder. It's also called the eighth wonder because of its value of compounding. Okay, so I have shown you one of the mutual funds which have given a good returns in past, and I have shown you through calculation that how you can make your money grow, how much investment you need for whatever goal you want, and you can decide, you can check how much you should invest. Suppose you can check it. Suppose you need 1 crore rupees. Let us say someone needs 1 crore rupees in say 20 years. Just tell you, let me just tell you, if someone wants 1 crore rupees in 20 years, so how much should be the SIP should be, how much is the SIP amount? What should be the investment SIP amount? So let us just make it 1500. So with 1500, sorry, it's not 1500, it's, let us say 12,000. 12,000 15,000, sorry, let us make it 15,000. Yes friends, so you need 15,000 SIP of 15,000 if you want a 1 crore rupees in 20 years. So you should invest 15,000 in different funds. Okay, so you can invest in 3 different funds, just like mid cap funds or multi cap funds and the index funds. Okay, so you will get a very good amount of, we can say 1 crore rupees in 20 years. Okay, so friends, you can decide your goal, and accordingly you can decide how much investment you need. So in this video I have given you a very good investment idea, that how can ordinary person and any Indian family that has no knowledge of the stock market and want to invest in want a very good return for their there may be different aims like retirement or the child education or the child marriage. So you can decide how much you need to invest, and you can go for 3 different funds. As I told you, you can go for mid cap funds, multi cap funds and the index funds. So friends, I have shown you through charts as well that how much this money can grow. I have shown you the chart of the index. So friends, I hope this video would have helped a lot and would help so many people by taking right knowledge about this. Is my biggest contribution and the gift support to all the Indian families and those who have no knowledge of stock market and want investment and they want a very secure return. So this is the best investment option, friends. This is one of the best investment option. Okay, this is one of the best investment option, so you can go for this. And friends, if anybody wants to as I told you that this is for people who are we can say who have no knowledge of stock market and don't want any kind of supervision or anything, but those who can who can learn and who can take some pains, because there is no pain or no gain. There is a simple thing, and even just like there is a concept, a mother is if some mother gives birth to some child, so that she has to bear the pain. That is called labor pain. So there is, remember friends, there is no gain without pain, right? And if anybody wants to right knowledge about stock market, so they can join my 1-year professional trader program, and this program is through private Telegram channel, and anybody can join this program at a very small amount of 1150 rupees for the whole program, and you can start learning right knowledge. So friends, if anybody is interested in this program, that's a professional trader program through private Telegram channel, so you can WhatsApp me at this number. But I request friends that don't call me, because so just think if some everybody starts calling me, so,
I will be full time busy in just attending the calls. So it's my request, you just WhatsApp me. I will reply you at my convenience. Okay, so you can WhatsApp me at 9797382772. Okay friends, let me just tell you one more thing, that how we can investment. Let me just show you how we can invest. Suppose someone wants to invest in any of the mutual fund like HDFC or ICICI mutual fund. So you can just online type ICICI mutual funds. So you will open to this page. This page will open. Once this page open, you go to new investor. Our first time investment, first time with ICICI Prudential mutual fund. So you just click there. You will get the steps that you have to follow. What all steps you have to follow? So there is a single 6-step approach to investment in mutual funds. First thing is you have to fill your personal information. You give your personal details including PAN number. You must have PAN number also. Second thing is your investment details, like your select your funds for investment. You have to select the funds, like I have told you 3 types of funds: mid cap funds, multi cap funds, and the index funds. Then you have to choose the nominee also. Okay, so you will fill the nominee details. The third one is the bank detail. You have to fill the bank details there. And the third one is you will get user ID and username and password. You have to make user ID and password. Once you get username and password as done, so you can go and make payment and start your SIP. You can select the particular date at which you want SIP. So friend, this is a simple procedure to go for this investment. So I have explained everything in this video, starting from what all investment option we have and how it has grown. Hope this thing will help a lot of my Indian families, and this is my support to all Indian families and my followers. So friends, with this video I wish you all a good luck in your financial independence. Those who don't want any kind of short term market recession and fears of market, don't want any kind of headache, so this is a safe investment option for all those. So friends, मैं इस वीडियो के साथ आपको यहीं पर मैं आपका मैं आपको आपके जो आने वाले भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए मैं आपको बहुत मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप अगर इस म्यूचुअल फंड के थ्रू या अगर अपना जो कैरियर स्टॉक मार्केट पे बनाना चाहते हैं, अगर आपका इन्वेस्टमेंट आप अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप इन 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को अपनाइए. आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए और आपको लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा. मिनिमम बोल रहा हूँ कि 12% रिटर्न आपको मिलेगा. मिनिमम में बोल के चल रहा हूँ, क्योंकि आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हमारा टाइम अच्छा ही होने वाला है, फ्यूचर बढ़िया से बढ़िया होने वाला है. ठीक है, कि अगर हम जिस टाइम पे राजा महाराजा होते थे उस टाइम का कंपैरिजन अगर हम मॉडर्न लाइफ से करें, तो उनके कंपैरिजन में आज की एक नॉर्मल एक आम नागरिक भी बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं. ठीक है, तो यही चीज़ के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ. अगर किसी को मेरा 1 ईयर प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोग्राम ज्वाइन करना हो तो आप मुझे 9797382772 पे व्हाट्सएप कीजिए. और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे प्लीज़ कॉल मत कीजिए, बिकॉज अगर आप कॉल्स में टाइम वेस्ट होगा तो उसमें बहुत सारा हमारा टाइम अननेसेसरी वेस्ट होगा. सो फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम के लिए एक बहुत सिंपल सा चार्ज रखा गया है, दैट इज़ 1150 रुपीज़. और ये चार्ज इसलिए रखा हुआ है ताकि आप लोगों में एक डिसिप्लिन हो, आप लोगों में एक चीज़ हो कि आपने कुछ चीज़ पे किया हुआ है, आपने मेरे को कुछ पे किया हुआ है और आप उसको लर्न करें. सो ये प्रोग्राम सीरियस ट्रेडर्स के लिए, कि जो भी लोग बहुत सीरियसली मार्केट को लर्न करना चाहते हैं राइट वे में, तो उनके लिए मैंने 1 ईयर प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है. और उस प्रोग्राम को चलते हुए अभी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स हुए हैं और अभी तक इस प्रोग्राम में अराउंड अबाउट 45-50 लोग जुड़ चुके हैं. इतने लोग इस प्रोग्राम के साथ जुड़ भी चुके हैं और वो राइट नॉलेज ले रहे हैं. ठीक है, तो अगर आप भी उनका पार्ट बनना चाहते हैं, अगर आप भी इस राइट इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हो, तो आप मेरे साथ जुड़िए. मैंने एक बहुत ही सिंपल चार्ज रखा हुआ है. इतने मिनिमम चार्ज पे आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जो बहुत सारे वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहे हैं, 2-2 दिन के वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहे हैं 12,000 15,000 रुपीज़ चार्ज करके. और मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 2 दिन में कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता. लेकिन अगर आपको सीखना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, मिनिमम 1 ईयर का टाइम आपको देना पड़ेगा मार्केट को सही तरीके से लर्न करने के लिए. ठीक है, तो इस वीडियो के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ और आप सबको मैं गुड लक करता हूँ.